Welcome student to my channel. I'm Chinmay Jain preparing a video on final accounts for you. We have already discussed the theory of final accounts and we already know the direct and indirect expense and difference between asset and liability. Today we will solve question number 3 of HSC board, Maharashtra board. Question number 3, page number 320. Let's start with the question. From the following trial balance of Sanjeev and Sons prepared trading and profit and loss account for the year ending on 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. First thing is opening stock. So now we will make the markings that where we have to put these specific items. So first is opening stock. Opening stock is kept in trading accounts. I'll write a T in front of it. Next is purchase and sales. Both will be written in trading account. Again, I'll write a T for purchase and sales. Next is carriage outward. Carriage outward is an expense related to sales, so it will be written in profit and loss account. So I'll put a P here. Next is plant and machinery. It is an asset. I will write balance sheet asset side BA for this. BA notifies balance sheet asset side. Next is debtors and creditors. Debtors will become a part of asset and creditors is liability. Therefore, I have written B only as balance sheet. Next is returns. Returns means purchase return and sales return. So I will write T in front of it. Most important, जब भी हमें कोई adjustment करना होगा तो हम एक dot लगाएंगे to notify that adjustment. Here I will put two dots for one for purchase return and another for sales return. Okay, coming to the next point, buildings. Buildings is our asset, so balance sheet asset side. Then next is motor van. It is also an asset, so same we will write here, balance sheet asset side for motor van. Next is plant and machinery. Printing and stationery, it will go in profit and loss account as it is an indirect expense. Next is wages. Wages will be written in trading account. As you all know, it is a direct expense. Next is reserve for doubtful debts or bad debts. दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने लास्ट ईयर हमारे प्रॉफिट्स में से निकाला था, तो इस साल फिर से हम प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं और इस साल के लिए नया रिजर्व हम लोग क्रिएट करेंगे. सो दिस विल बी रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट इज कमीशन. अभी कमीशन इफ इट इज रिटन इन डेबिट साइड it will be our expense, and if it is written in credit side it will be our income. Doesn't matter, we will write both the things in profit and loss account. Next is office expenses. This is again our indirect expense. We will write it in profit and loss account. Carriage. As we have already seen, carriage outward is given. We will consider it as carriage inward, and carriage inward is written in trading account. Correct. Next is furniture. Furniture will be written in balance sheet asset side. Premises, it is a part of building, you can say. So premises will be written in balance sheet asset side. Next, premises balance sheet asset side. Next is loose tools. Loose tools again forms part of asset balance sheet asset side. Drawings will be written in balance sheet, but it will be added in capital. So to remember that I have to it will not be added, it will be reduced from the capital. So just to remember that, I will put a dot in front of capital which will remind me to reduce drawings from it. Next is bank overdraft. Bank overdraft is our liability balance sheet liability side. Cash in hand is our asset and it will be written in balance sheet asset side. Next is dividend.
Dividend is our income and it will be written in profit and loss account. Next, capital. Capital will be written in balance sheet liability side, and I will shift it like the dot should also be visible. Okay. Next is salaries. Salary is our expense. We will write it in profit and loss account. Bills receivable and bills payable. One is our asset, another is liability. So I will write it a simple B for it. Balance sheet. एक asset side में जाएगा, दूसरा liability side में जाएगा. Next is advertisement. Next is bad debt. बैड डेट हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारे P&L में जाएगा, एक्सपेंस नहीं लॉस है. एंड फाइनली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये P&L में जाएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है. ओके, सो वी आर डन विद द ट्रायल बैलेंस. अब हम लोग कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं. सबसे पहला एडवर्टीजमेंट का एडजस्टमेंट है, इट इज रिटन फॉर 3 years. तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे. एडजस्टमेंट 3 years के लिए है तो हम लोगों को इसके लिए दो इफेक्ट देने होंगे. पहला, हमें यहाँ से एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years लेस करना पड़ेगा और वो एडवर्टीजमेंट हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, उसको हम नेक्स्ट ईयर लेकर के जाएंगे और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से उसे हम लेस करेंगे. दूसरा इफेक्ट हमारा सॉरी, एक हम एडवर्टीजमेंट में से लेस करेंगे और दूसरा हम बैलेंस शीट में लिखेंगे. ये दो एडजस्टमेंट हुए. अभी है एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन 31st March 2019 was at cost rupees 60,000 and market value 70,000. We have to write the amount whichever is less, cost or market value whichever is less. So here 60,000 is the amount which is less. So 60,000 will be given two effect. One we will write in trading account, another I will write in balance sheet. Next, outstanding expenses. In outstanding expenses, wages 4,000 and salary 2,400 are given. So I will go in trial balance, put a dot in front of wages and another in front of salaries so that I can remember that I have to add these amount in wages and salary. Why I have added these amount? क्योंकि ये इस साल के खर्चे हैं. आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट भले ही नहीं हुआ है लेकिन पे इसी साल में किया है. सॉरी, एक्सपेंस इसी साल का है, इसलिए मुझे करंट ईयर में ही इसे कंसीडर करना पड़ेगा. सेकेंड इफेक्ट इन दोनों का होगा, मैं इसे डालूंगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्योंकि ये मुझे पेमेंट करना बाकी है, इसलिए मेरी लाइबिलिटी होगी. Third thing, provide depreciation at 10% on motor van and 5% on furniture. तो हम मोटर वैन पर जाकर एक डॉट लगाएंगे और एक डॉट हम लगाएंगे फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर, जो कि हमें याद दिलाएगा कि हमें यहाँ डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है. ऐड करेंगे या लेस? यस, डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारी एसेट की कीमत कम करता है, इसलिए हम जो भी कंसर्न एसेट होगी उसमें हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट होगा, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम बैड डेट्स की बात करते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बैड डेट्स लिखा है तो ये ओल्ड बैड डेट हुआ और जो नई हुई है हम उसको इसमें ऐड कर देंगे. तो वी विल ऐड न्यू बैड डेट्स इन द ऑलरेडी रिटन बैड डेट्स 2,000 रुपीज. और सेकेंड इफेक्ट हमारा होगा कि जो बैड डेट हुआ है मतलब मिलने वाला पैसा डूब गया, तो अब हमें वो पैसा दोबारा नहीं मिलने वाला, तो वो अमाउंट हमारा डेटर्स में इंक्लूडेड होगा, तो डेटर्स में से हम उसे माइनस करेंगे. नेक्स्ट है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स पर हमें रिजर्व बनाना है और वो रिजर्व हमारा जो है डेटर्स में से ही माइनस होता है, तो हम डेटर्स पर एक पॉइंट और लगाएंगे. और ये जो RDD है इसे हम
ओल्ड आरडीडी में ऐड नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है पुराना वाला, हम इसमें इसे ऐड नहीं करेंगे। हम लोग अलग से नया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट लिखेंगे विथ अ नेम न्यू आरडीडी। प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें 10% प्रोवाइड करना है। तो हम लोग इंटरेस्ट के दो इफेक्ट देंगे। पहला तो हमारा कैपिटल जो है उसमें ये इंटरेस्ट ऐड होगा, तो एक डॉट में कैपिटल पे लगाऊंगी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये ओनर की इनकम होती है। ओनर जो है वो सोचता है कि अगर मैंने ये पैसा बिजनेस में ना लगाया होता और बैंक में रख दिया होता तो भी मुझे 10% इंटरेस्ट बिना काम किए मिलता। तो बिजनेस कहता है कि इट्स ओके, आई विल पे यू द सेम इंटरेस्ट। तो बिजनेस अपने प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पर पे करेगा। इसलिए कैपिटल जो है हमने उस पर एक डॉट लगाया है, वो इंटरेस्ट हम इस पर ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट इसका होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इंटरेस्ट को हमारे एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे। इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या समझा, इस पॉइंट में हम लोगों ने समझा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक चीज जो बिजनेस के लिए खर्चा हो रही है वही चीज ओनर के लिए इनकम हो रही है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स of adjustments. Now let's start with the problem solving. To solve this question, we have to prepare a format like this. In the books of Sanjeev and Sons, Trading and Profit and Loss Account for the year ending on 31st March 2019. Here we are preparing Trading and Profit and Loss Account combined. I have left approximate 10 lines for trading account and remaining account will be for profit and loss account. On the next page, I have prepared balance sheet and it is written as balance sheet as on 31st March 2019, and this will be the format of balance sheet. You can pause the video and copy the format. Starting the question, first thing is opening stock. So I will write to opening stock and I'll write the amount in net column 22,000. Second thing is purchases, and as we have made a dot in front of purchases and sales, so we will write the amount in gross column, that is 1,78,000, and for sales by sales and amount is 4,60,000. Next is next thing is carriage outward, and as we have written P in front of carriage outward will be written in profit and loss account to carriage outward. Amount will be written in net column. Carriage outward is 4,800. 4,800. Next is plant and machinery, that we have to write in balance sheet asset side. Plant and machinery. Now see, there is no dot in front of plant and machinery, so we will write the amount directly, that is 50,000. I hope you all are having question in front of you. Debtors and creditors. Debtors will be written in asset side of balance sheet, and the amount will be written in gross column, that is 44,000. Now here we have put two dots. You can see here two dots are there, right? So I will leave three lines here, and
After leaving these lines, after leaving these lines, I will start writing so that there should not be any mistake here. Okay. Now, after debtors, creditors is there. So creditors will be written in. See, initially we should write capital in the balance sheet, but according to our syllabus, it's not a problem if we write anything else first. So I will write creditors and amount is 76,000. Okay. Next is returns, that is purchase return and sales return. So coming back to purchase, I will write here less purchase return, and amount of purchase return is C. For purchase return, amount will be written on credit side, and for sales return, the amount will be written on debit side. Less sales return, and amount is 2000. Okay, so what will be our net amount? Net amount will be 1,74,000, and for sales it is 4,58,000. Next is buildings. So buildings will be written in balance sheet. Buildings. Buildings amount is 58,000. Oh, there is no dot in front of buildings, so it will be written in net column 58,000. Next is motor van, and there is a dot in front of motor van. So amount will be written in gross column, and that is 40,000. And we will leave a line for that. Next is printing and stationery, that will go in profit and loss account to printing and stationery. Put a dot to make it short. Printing and stationery is 3,000. Amount will be written in net column directly because there is no dot in front of printing and stationery. Next is wages, that will be written to wages. And yes, there is a dot in front of wages, and therefore the amount will be written in cross column. Next is reserve for bad debts. So reserve for bad debts will come in profit. Okay, so as I always say, we will leave a line for gross profit brought down. And in the next line, I will write by old RDD. Okay, as we have to prepare a new RDD, we will always name it as old RDD so we can understand the difference. The amount for old RDD is 3,200. Next, commission. As it is income, I will write it in P&L account by commission, and amount is 2,400. Next is office expenses, to
office expenses. There's no dot in front of it. Amount will be written directly 5,400. Next is carriage. Okay, so this is carriage inward and it will be written in carriage inward. Amount is 9,000. नेट में डायरेक्टली अमाउंट आएगा 9,000 रुपीज का. नेक्स्ट है फर्नीचर. फर्नीचर कहाँ आएगा? यस, बैलेंस शीट फर्नीचर. And I have a dot in front of furniture, so I will write the amount in. Yes, furniture is 20,000. Next is premises. Premises is part of our asset, so premises is 81,000. Loose tools, this is also an asset, and amount will be written in net column 20,400. Next is drawings. So now it's time to write capital. Whatever the capital will be, I will write the amount in gross amount column later. I'll not jump to capital right now. I will just write less drawings and amount of drawings will be written here 24700, right? Next is bank overdraft, which is our liability. So it will be written, okay, see, after writing drawings, I will have to add two things. First is interest on capital, and second one is net profit. So after adding these two things, now I will write bank overdraft. Bank OD, and the amount of bank OD is 22,000. Next is cash in hand. Cash in hand is our asset. Okay. Cash in hand and amount is 71,000. Next, dividend. We have received dividends. It will be written in profit and loss account. Coming here by dividend. Amount of dividend is 3,300. 3,000. It will be written in net column as we have no dot in front of it. Now it's capital 1,40,000. We already know where we have to write capital 1,40,000. Next is salaries 2, and there is a dot in front of salaries. So salaries will be written in gross column, that is 44,000. Next is bills receivable and bills payable. So bills receivable is our asset
It will be written in asset side. Amount is 5,600 and bills payable is our liability. So it will be written in liability sides 8,400. 8,400. Next is bad debts. Bad debts will be written in, of course, P&L debit side. Actually, I'll write it as old bad debt. Old bad debt. Amount is 2,400 and whatever will be the new bad debt will be added in it. Next is advertisement. And as it is given for 3 years, we will write 6,000 in gross column and later we will shift the amount of advertisement for next 2 year to the balance sheet. Now we are done with the trial balance. Moving to the adjustment, the very first adjustment will be advertisement only. So 6,000 is the amount of advertisement for 3 years. So how much will be transferred to balance sheet for 2 years? And yes, the amount is 4,000 divided by 3 we have done. Okay, so the amount in the net column will be 2,000. Yes, now we will write this advance for advertisement and this will be transferred to balance sheet as we have already done the expenses and now it's time to have its fruit. तो ये हमारी asset होगी क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट किया है और अब हमें उसका प्रतिशत मिलना बाकी है. इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा 4,000 का है. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इसे ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का 60,000. दैट इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. The same amount will be written in balance sheet, closing stock and amount is 60,000. Next is outstanding expenses. में दो expenses है. First is wages. So I will write here add outstanding wages. Amount है हमारा 4,000 और ये माइनस करने के बाद नेट हमारा हो जाएगा 24,000. Oh, sorry, it's 28,000 minus 4,000. So it will be 32,000. So same outstanding wages will be written in the balance sheet simultaneously. अब outstanding है, पे करना बाकी है, तो ये हमारी liability है. Outstanding wages और amount हमने लिखा 4,000. इसी तरह से outstanding salary भी हमारे पास है. तो here I will write add outstanding salary. कितनी है? outstanding salary है 2,400. 2,400 की हमारी outstanding salary हो गई. तो amount हो जाएगा 46400. ये मैं डायरेक्टली नेट करती जा रही हूँ ताकि हम लोगों को आगे जाकर के प्रॉब्लम ना हो और हमें फिर लास्ट में सिर्फ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना बाकी रहे. आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400 जो है अगेन हम बैलेंस शीट में आएंगे.
आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400, ये मैंने बैलेंस शीट में अमाउंट लिख दी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट 10%। कहते हैं प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मोटर वैन एंड 5% ऑन फर्नीचर। पहले चलते हैं मोटर वैन की तरफ। मोटर वैन हमारे पास है, इसमें हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है क्योंकि ये असेट की वैल्यू कम करता है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 40,000 का 10% हमारा हो जाएगा 4,000। और नेट अमाउंट हमारा आ जाएगा 36,000। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप चाहें तो अमाउंट दो बार अलग अलग से भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से डेप्रिसिएशन लिख करके पहला अमाउंट लिख सकते हैं मोटर वैन का, जो कि है 4,000। और इसके बाद नेक्स्ट हमें करना है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर का हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, फर्नीचर पे चलते हैं। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 5% कैलकुलेट करेंगे और मोटर वैन का 5%, सॉरी फर्नीचर का 5% कितना होगा बोलिए, 1,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 19,000। ओके, सो फर्नीचर का हमारा हो गया है डिप्रिसिएशन 5% 1,000। सो ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000 हमने P&L में लिख दिया। इसका अब हम टोटल लगा देंगे 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो पहले बैड डेट्स राइट ऑफ कर देते हैं। हमने यहाँ पर बैड डेट्स ओल्ड लिखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओल्ड बैड डेट, इसमें हम कर देंगे ऐड न्यू बैड डेट। और न्यू बैड डेट है हमारी 2,000 रुपीज की। तो इस तरह से नेट अमाउंट हमारा हो जाएगा 4,200, 4,400। और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा डेटर्स में से भी हम लोग इसे लेस करेंगे न्यू बैड डेट, और अमाउंट है हमारा न्यू बैड डेट का 2,000 रुपीज। ठीक, तो ये जो लेस किया हमने, इसके बाद यहीं पर हम अमाउंट लिखेंगे 4,200, 42,000। और इसके बाद अब आ जाते हैं हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट पर। ठीक, तो बैड डेट्स के दो इफेक्ट हमने दिए, एक हम लोगों ने ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट किया तो हमारा 4,400 का नेट अमाउंट आया है, और दूसरा हमने बैड डेट्स को डेटर्स में से लेस किया है, तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग अमाउंट मतलब ओरिजिनल डेटर्स आया है। अब हम लोगों को इस पे क्रिएट करना है
न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। न्यू आरडीडी कहा गया है कि 5% ऑन डेटर्स बनाना है, तो 5% किसका होगा? तो ये 5% होगा 42,000 का। आई विल राइट हियर एट द रेट 5% ऑफ 42,000 फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, और ये 42,000 का 5% हमारा कितना हो रहा है, जरा कैलकुलेट करेंगे। ये हो रहा है 2,100। ठीक, अब नेट अमाउंट जो है वो हम बाहर की तरफ लिखेंगे 39,900। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 10% ऑफ 1,40,000 आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 10% ऑफ 1,40,000 इज 14,000। ये 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पी एंड एल में भी लिखेंगे, इससे पहले कि हम भूल जाएं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and amount is 14,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 14,000 आ गया है, तो अब हमारे पास बचा है एक नेट प्रॉफिट कैपिटल में लिखना है हमें। हमारे एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब प्रॉफिट के कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। जो भी साइड बड़ी होगी उसका टोटल हम लिखेंगे यहाँ पर एंड में। छोटी साइड में से बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा वो अमाउंट होगा प्रॉफिट। तो हम क्रेडिट साइड का अगर टोटल लगाते हैं तो हमारा आता है 5,18,000। ये साइड का टोटल आप जरा पॉज करेंगे और टोटल लगाकर देखेंगे, इसका टोटल आना चाहिए 2,37,000। और जब आप 5,18,000 माइनस 2,37,000 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आना चाहिए 2,81,000। ये 2,81,000 का अमाउंट अब हम ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के, नेट, आई एम सो सॉरी, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,81,000। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम लोग डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे जो कि मेरे पास आ रहा है 2,89,900। और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मेरे पास आ रहा है 87,100। तो आप जब दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और बैलेंसिंग करेंगे तो आपके पास आएगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और हमारा टोटल इधर का 87,000 था, नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2,02,800। ठीक है, टोटल इधर भी वही आ जाएगी 28,99,00। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम लेकर जाएंगे कैपिटल में। विल ऐड हियर नेट प्रॉफिट 2,02,800। तो हमारा जो कैपिटल है वो आ जाएगा 3,32,100। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हम लगाएंगे एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का टोटल। टोटल हमारा जो है मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 4,44,900 और 4,44,900। ठीक है, तो एक बार जरा आप टोटल कैलकुलेशन सारे करके देखेंगे। मैंने वीडियो का टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।